नमस्ते। अच्छा, इन टुडेज वीडियो, देखिए मुझे वीडियो नहीं बना के करीब करीब 3 महीने हो गए। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर 3 मंथ्स आई थिंक। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। यह जो अभी लेटेस्ट केस है, सी दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंटेंट बिकॉज वी आर ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, or YouTube creators or Instagram creators are content creators. So this is in the interest of the content creators. तो अब ये जो लेटेस्ट केस है कॉपीराइट स्ट्राइक्स का, तो बेसिकली ANI वर्सेस मोहक, तो इस केस के संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। तो ये केस है कॉपीराइट एक्ट का। फिर लेकिन यहाँ पर बात ये भी आती है कि भाई फेयर यूज का क्या होगा अगर से कोई थोड़ा सा पोर्शन यूज करता है, कुछ सेकंड्स का वीडियो का, या कोई एक दो सेंटेंसेस किसी वेबसाइट का या किसी आर्टिकल का। तो ये तो एक मिनिमल यूज है ना। तो ये एक फेयर यूज वाला जो एक डॉक्ट्रिन है, देखिए देखा गया तो दो डॉक्ट्रिन्स है, फेयर यूज एंड फेयर डीलिंग। फेयर यूज यूएस का कॉन्सेप्ट है, फेयर डीलिंग इंडिया का कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉपीराइट एक्ट का पार्ट है, और यूएस का जो कॉन्सेप्ट है फेयर यूज का वो थोड़ा सा इवॉल्व है। और वहां पर भी इसी तरह से, जैसे मोह का हो गया है, कई सारे यूट्यूबर्स है जो डिफेमेटरी केसेस के, जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में चलते हैं। तो इसी तरह का एक बड़ा केस हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम का। तो वहां पर एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ है। तो उस लैंडमार्क जजमेंट के बाद फिर कंटेंट क्रिएटर्स को एक डायरेक्शन मिल जाता है, उनको एक अपनी परिधि मिल जाती है, एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक बाउंड्री मिल जाती है, एक सरकमफ्रेंस मिल जाता है कि जिसके अंतर्गत उनको क्या वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि दिस इज अ ओल्ड लॉ, ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। तो इसका आई थिंक इसका वो भी 1957 है। अभी आगे देखेंगे तो पता लगेगा, एक्ट ऑफ 1957। तो इसमें रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस केस में थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ जो भी न्यूज़ है, या ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज और फेयर डीलिंग का है, तो उसमें कितना हमको स्कोप है और क्रिएटर क्या कर सकता है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को। और मेरा जो एरिया है वो स्पिरिचुअलिटी का है। आई कीप ऑन टॉकिंग ऑन अद्वैत वेदांता, सो माय टॉक्स आर बेसिकली इन द एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इवेंचुअली एनलाइटनमेंट, इसकी ओर होते हैं। तो मैं इसी केस को लेकर मैं कोशिश करता हूँ कि इस एरिया को, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी का एरिया है और स्पिरिचुअल कंटेंट है, तो वहाँ पर फिर क्रिएटर का आ, दायरा क्या होगा। हाउ द व्हाट अबाउट द व्हाट अबाउट द कंटेंट इन द एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दैट कंटेंट इन द आईज ऑफ और विद इन द लॉज दैट आर प्रिवेलिंग। और फिर क्रिएट, और जो क्रिएटर है जो अपने आप को क्रिएट कर रहा है, सो देर आर दीज वर्ड्स ऑफ द मास्टर और वर्ड्स ऑफ एन एनलाइटेंड बीइंग, उसका कॉपीराइट। तो ये इधर का एक क्रिएटर है, तो वो भी अपने आइडियाज को शेयर करता है, एक्सपीरियंस उसको शेयर करता है। तो उस एरिया को भी मैं डील करना चाहता हूँ इसी केस को संदर्भ में लेके, इन द इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस केस। तो कुछ शेयर करता हूँ पहले मैं स्क्रीन्स, फिर उसके बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले फेयर यूज वर्सेस फेयर डील। फेयर यूज जो, जैसे मैंने कहा, ये कंसेप्ट तो यूएस का है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ये थोड़ा सा इवॉल्व है। और फेयर डीलिंग विस विस फेयर यूज, ये थोड़ा सा हमारे तरफ रिजिड है। ये एक्सेप्शन बेस्ड है, हमारा लॉ जो है वो एक्सेप्शन बेस्ड है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो इसलिए हमारे पास तकलीफ होती है, और हमारे पास कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं है। आई मीन इफ यू गो इन टू द पास्ट डिसीजंस, तो कोई प्रेसिडेंस नहीं है बड़ा सा। तो फेयर यूज एंड फेयर डीलिंग आर एक्सेप्शंस to the copyright that allow limited use of copyright material without the permission of the copyright holder. While both concepts aim to balance copyright protection with public interest, they differ in their application and flexibility.
तो दोनों में डिफरेंस इस चीज का है. ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल. फेयर यूज प्राइमरली a यूएस concept is more flexible as I say and less restrictive than fair dealing. तो फेयर डीलिंग इज थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है. इसके फीचर्स में यदि जाते हैं तो तीन चार कंपैरिजन है. यू कैन गो इन डिटेल दोज हु वांट टू स्टडी दिस लॉ इन डिटेल. तो पहला अगर ये एक फीचर लेते हैं ओरिजिन का, सो इट फेयर यूज इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्राइमरली यूएस ओरिजिन है, और फेयर डीलिंग प्राइमरली ब्रिटिश लॉज है. ऑलमोस्ट ऑल आवर लॉज आर कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश लॉज. In terms of flexibility, fair use is more flexible and broad, whereas fair dealing is more specific and restrictive. स्कोप में यदि जाते हैं तो वाइड रेंज ऑफ यूजेस परमिटेड है फेयर यूज में, whereas in fair dealing में लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशंस. जब हम सेक्शन 52 जाएंगे तो आपको हमको बहुत सारे सिचुएशंस पता लगेंगे. एप्लीकेशन में यदि जाते हैं जुडिशियली डिटरमाइंड है, और डिफाइन अभी फिलहाल तो हमारा डिफाइंड बाय लॉ. तो हमारे पास कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक कोई जिसको कहते हैं लैंडमार्क जजमेंट इस तरह से कुछ अभी हुआ नहीं है इन द केस ऑफ कॉपीराइट लॉस. और कॉपीराइट लॉस के ही अगर से हम सेक्शन में जाते हैं तो आई थिंक आई वाज सेइंग द कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट इसको गवर्न करता है. ये गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है, copyright.government.in. तो इसमें इन्फ्रिंजमेंट रिलेटेड एक चैप्टर है. सो दिस चैप्टर ऑन इन्फ्रिंजमेंट रिलेटेड चैप्टर 11, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, वायोलेशन ऑफ कॉपीराइट. तो देर इज समथिंग कॉल्ड सेक्शन 52. सो सेक्शन 52 इज talking about those, as I said in the earlier, talking about those exceptions. So certain acts not to be infringement of copyright. तो क्या क्या है? The following acts shall not constitute an infringement of copyright, namely, A में है a fair dealing with any work not being a computer program for the purposes of. तो यहाँ पर तीन purposes दिए हुए हैं: private or personal use including research, criticism or review whether of that work or of any other work. तीसरा एक्सेप्शन है द रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ए लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक. और इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है कि इससे रिलेटेड कोई मटेरियल अपने कंप्यूटर में स्टोर करता है तो वो भी कोई वॉयलेशन नहीं है. तो इसके डिटेल में यदि जाएंगे तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है. फिलहाल मैं आई एम जस्ट लिमिटिंग माई सेल्फ टू ए वेरी लिटिल बिट. दिस इज अ वास्ट सेक्शन, तो यू हैव टू गो इनटू ऑल दोज exceptions in various circumstances. तो बेसिकली हमारा लॉ एक्सेप्शन बेस्ड है. तो अब यहाँ पर ये बात आ रही है फेयर यूज की. तो यदि हम इसका केस देखेंगे मोहक का और एएनआई का, तो मैं अब यदि मोहक के इस पर्टिकुलर केस को यदि बात करते हैं तो द मोहक हैज ऑलरेडी एग्रीड. So if I go by the news of Indian Express, influencer Mohak Mangal agrees to remove objectionable parts from YouTube video on ANA. See, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक अलग बात है. यदि आपके वीडियो में आप कुछ गाली गलौज कर रहे हैं या कुछ डिफेमेटरी है या कोई आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लॉ अलाउ नहीं करता है, देन दैट इज अनदर एस्पेक्ट. ANI told the Delhi High Court that Mohak Mangal had violated the news agency's copyright by using its news feed as well as its logo in his videos. तो अब इसमें और भी थोड़ा यदि जाते हैं डिस्कशन में तो कुछ ऐसे बातें हैं जैसे जस्टिस अमित बंसल ने कहा ओरली रिमार्क ऑन द यूज ऑफ इम्प्यूटेशन सच एज वसूली घटिया etc and said the videos on the face of it are disparagement. तो भाई आप गाली गलौज नहीं कर सकते. सी एएनआई हो या कोई भी हो, वो ये कह सकता है कि भाई ये सब मेरा क्रिएशन है, ये मेरा क्रिएटिविटी है, ये मेरा असेट है, ये मेरी मेहनत से मैंने बनाया है. तो यू हैव नो राइट टू जस्ट यूज इट. वो कह सकता है कि इसकी प्राइस है, हम इसकी ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है या ये एक सर्विस है. देन द पर्सन हैज टू पे, टेक द सब्सक्रिप्शन, टेक द सर्विस टू यूज दैट मटेरियल. बट यहाँ पर केवल बात ये आती है कि फेयर यूज है, व्हाट अबाउट फेयर डीलिंग देन.
इन आवर ओन लॉस। तो यहाँ पर थोड़ा और आगे भी जाते हैं, तो उनके एडवोकेट कह रहे हैं, सीनियर एडवोकेट चंद्रलाल, ही इज अपियरिंग फॉर मंगल, opposed ANI's suit, submitting that they have no right to license in de minimis de minimis use, which refers to the principle that very minor or insignificant use of copyrighted material are not actionable as infringement। जो हम बात करें वही फेयर यूज इन यूएस वर्सेस फेयर डीलिंग इन इन इंडिया, वही जो हमारा कॉपीराइट एक्ट भी कह रहा है फेयर डीलिंग का। एंड मैंने अभी वो तीन सर्कमस्टांसेस मैंने जो लिए हैं, करंट इवेंट्स, रिसर्च, रिव्यू, क्रिटिसिज्म, इस तरह से। तो वही उनके एडवोकेट कह रहे हैं कि ये फेयर डीलिंग में आना चाहिए, ये इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। तो फिलहाल तो ये कोर्ट अभी केस के अधीन है, सो वो अभी कंक्लूजन तो नहीं हुआ है, फाइनल ऑर्डर तो आया नहीं, इट इज सब जुडिस, सो वी डोंट नो which side it will be decided eventually, and when it comes to this law, when it comes to use of little content from any media portal or media house or any other website। तो उस संदर्भ में अभी इसमें क्या होगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी लैंडमार्क जजमेंट, वी कांट इवन प्रेडिक्ट, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक लॉ आई एम सेइंग। तो अभी आगे देखेंगे इसमें अपडेट अपडेट क्या होगा। अच्छा, और आगे यदि और बढ़ते हैं हम, तो इस चीज में एक चीज अच्छी हो गई, बिकॉज कंटेंट क्रिएटर तो बेचारा छोटा सा इंडिविजुअल है, अभी तो हालात खराब है कंट्री में, जॉब्स की प्रॉब्लम है, वो और जॉब लॉसेस भी है। तो कंटेंट क्रिएटर वो अपने अपने एवेन्यूज कुछ नया क्रिएट करने का, कुछ यूट्यूब या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, अपने अपने नीश एरियाज में कोई किसी की किसी तरफ थोड़ी सी एक्सपर्टीज है, तो वो अपना अपना नीश चूज करता है और उसमें कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता है। सो ही विल हैव टू, सो दिस कंटेंट क्रिएटर इज मेकिंग ए करियर आउट ऑफ इट। तो उसके प्रोटेक्शन की बात इज इम्पोर्टेंट। नाउ इन दिस रेस्पेक्ट, जहाँ पर ये एएनआई और मोब की केस आई, तो गवर्नमेंट हैज कम फॉरवर्ड एंड गवर्नमेंट हैज freed up these entities, Doordarshan, AIR, PIB, so they have freed their content for creators, so creators can use their content without any copyright violation, any dispute। So agencies including Prasar Bharati, Akashvani, and Doordarshan National, and the Press Information Bureau have made their content available for public use across social media platforms, including YouTube. So this is a good news। और एक मैंने कोई पढ़ा भी था, आई थिंक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो issued their similar statement in the public। So the content creators can resort to content from these agencies। अगर से अभी के until इसके ऊपर the air is not clear, so until this case, तो यहाँ पर मुझे कहना भी ये भी है कि मैं आगे मेरे व्यूज में शेयर करता हूँ। तो अभी अपना ये तो हो गया कि भाई एक्शन अपना क्या कहते हैं, कॉपीराइट एक्ट क्या कहता है, अभी प्रेजेंट केस हाईकोर्ट के सामने है, तो विच साइड दिस विल बी डिसाइडेड वी डोंट नो। अब यहाँ पर मेरा व्यूज ये है कि भाई इन दिस सर्कमस्टांसेस, सिंस वी डोंट हैव एनी लैंडमार्क जजमेंट, अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ एक्शन दिखाना चाहिए इन फेवर ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स। अब जहां पर बात आती है यूट्यूब की, सी यूट्यूब इज ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो यूट्यूब तो ये कहेगा कि भाई आई कांट सेफ गार्ड योर कंटेंट। सी यूट्यूब किसके किसके कंटेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, हर एक कंटेंट क्रिएटर को तो वो सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। एवरी कंटेंट क्रिएटर हैज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन द in the eyes of whatever the prevailing laws of that particular country। तो हमारे पास डिफेमेटरी लॉस है, let's say section let's say IPC 499 500, civil defamation, criminal defamation, and then we have something called we have also the IT laws, and then we have this law relating to Copyright Act of 1957, which I talked about, section 52,
जो भी उसमें एक्सेप्शंस है, तो उसके दायरे में रहकर ही कंटेंट क्रिएटर को अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो डिफेमेटरी नहीं हो सकता है, वो गाली गलौज नहीं कर सकता है, और खराब शब्दों का चयन नहीं कर सकता है, वो किसी को ये नहीं कह सकता है कि यार इसके चैनल को सब अनसब्सक्राइब करो, मत फॉलो करो। ये तो कोई नहीं कर सकता है, राइट। तो इसमें YouTube विल से कि भाई वी आर प्रोवाइडिंग यू ए फ्रेमवर्क, वी आर गिविंग यू टूल्स, वी आर गिविंग यू ए प्लेटफॉर्म, वी कांट प्रोटेक्ट योर कंटेंट, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कंटेंट। बट यहाँ पर YouTube इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट क्रिएटर्स उनका एक बैकबोन है। एवरी डे YouTube can grow only when there is a content in it, and YouTube is like, it's like a monster sitting out there and hungry for content। तो हर दिन कंटेंट क्रिएटर्स अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एवरी डे। आई डोंट नो, ट्रिलियंस ऑफ टेराबाइट्स, और आई डोंट नो हाउ मच इज द वॉल्यूम of content this YouTube is consuming and the content creators are creating. So this is growing. So YouTube as a big organization has to come in favor of the content creators. They have to stand for the content creators. Obviously those content creators who are creative, those who are really bringing value in their content, उनकी बात कर रहा हूँ। अब जो अगर से नेगेटिव कंटेंट है, कोई डिफेमेटरी है, तो उसके लिए तो वो इंडिविजुअल को टेक केयर करना पड़ेगा। And then comes to the government. Government has to come in favor of, stand for the content creators. This is one step, that is freeing the content of uh, Air India, Doordarshan, and all that. But they should also see what about the law. So law has to be transparent. See, as far as I'm concerned, I'm always in favor of uh, a transparent justice system, a faster, speedy redressal system। हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, या कोई स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट हो, आई एम फॉर लॉ, आई एम फॉर जस्टिस, आई एम फ्रॉम फॉर डेमोक्रेसी, आई एम फॉर फ्री स्पीच। सो आई एम ए चैंपियन फॉर स्पीच, फ्री स्पीच। सो जो हमारा एक तरफ हम कहते हैं कि प्रेस इज ए फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो वहां पर हम उसको फोर्थ स्टेट कहते हैं। So then what about the individual person who is a content creator, who is expressing his views, criticizing or whatever, but in a very rational, sober, and uh, in a legal manner? तो उसका प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। So the government has to come and garner for this, transforming whatever the old laws into new laws which are helpful for the creators. And as far as High Court and Supreme Court, I can only request, I can request that they should come out with some robust system so that हर एक इंडिविजुअल को कोर्ट जाना ना पड़े। See, what about the legal cost? Legal cost is a huge cost. A individual content creator cannot afford to go to high court, take the services of a very senior lawyer, and spend his time in courts for years. And then what about his content journey? तो वो कैसे करेगा? So it is not possible for him. He is an individual, maybe a small family, whereas these media houses or media organizations, they are biggies, they have resources, they have people, they can take the services of big lawyers, renowned lawyers। तो उनको ज़्यादा difficult नहीं होगा to fight the case। So for the individual content creator to fight out, say, challenging case, so I think all these three agencies, like government has to come forward, High Court and Supreme Court have to come out with what is, uh, you know clear thing in this। तो how far, I mean what are the boundaries? तो अगर से मतलब मिनिमम, मतलब क्या मिनिमम का कोई डेफिनेशन तो है नहीं। मतलब 1 घंटे का वीडियो है तो उसका 1 मिनट का ले सकते हैं, या कोई कुछ कुछ 5 सेकंड का क्लिप ले सकते हैं। अब जैसे अगर से ANI के केस में, ANI से ये हमारा है ये कंटेंट, ये कॉपीराइटेड है, यू हैव टू टेक लाइसेंस, यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन, और यू हैव टू पे फॉर इट, और पेनल्टी। और फिर ये फिर यूट्यूब का ये जो तलवार हमेशा लटकी रहती है, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स एंड योर चैनल हैज गॉन, यू आर गॉन फॉर एवर, योर कंटेंट जर्नी इज व्हाट टू से फक्ड अप। तो उसको उस केस में फिर क्या होगा? तो ये है वो बात। तो मैंने मेरे व्यूज रखे। अब आती बात मेरी, जो मैं बात करता हूँ हमेशा
spirituality. So I'm a person, I keep on speaking on Advaita Vedanta. So my domain is spirituality. Though I'm a finance person, I worked for 35 years in the corporate in various aspects of uh, the business. I was in manufacturing, trading with big companies at very senior levels. मेरा डोमेन तो फाइनेंस का है, टेक्नोलॉजी का भी है, लेकिन मैं एज ए नीश में बात करता हूँ अपनी अपना जो डोमेन है, मेरा जो एरिया है, वो मैं स्पिरिचुअलिटी और अद्वैत वेदांता इस एरिया पे, इस टॉपिक पे बात करता हूँ कंटिन्यूस। तो अब उस एरिया का जो कंटेंट, तो कोई स्पिरिच अपने आप को क्लेम करता है, कोई स्पिरिचुअल मास्टर है या कोई कहता है गुरु है, कोई सदगुरु अपने आप को कहता है, तो उसके वर्ड्स है, उसका कंटेंट है, तो उसका कैसे, उसका यूज का कैसे, एंड व्हाट अबाउट द पर्सन हु इज ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, उस स्पिरिचुअल जर्नी में अगर से वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो वो उसका क्या हो। सो एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, लॉ इज सेम, लॉ इज गोइंग टू सेम, लॉ इज द सेम whether it is business content, technological content, or spiritual content. Content is content. Law is going to be the same. So अब इसमें मैंने मेरे अपने कुछ थॉट्स शेयर किए हैं। तो बिफोर स्पीकिंग ऑन दोज थॉट्स, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर देम एज दे आर. So this I jotted down in English in the area of spirituality. What about that content, and what about the copyright laws for that content? मैं इसको पढ़ता हूँ एज इट इज, उसके बाद देखेंगे कुछ बात करने की बात बनती है क्या। सो लेट मी जस्ट रीड एज इट इज. See what I'm saying. All content in the world of spirituality is just shit. Is just a shit. All words are just empty words. Atman and Brahman are just words until they become part of your existential experience. If any guru or sadguru has a claim on their words, then they are not a guru but a guru ghantar. You can tell him to put his words in his G. Even enlightenment is just a word. I keep on saying the word apple is not the fruit apple. So all these are just words. It is a word so this even enlightenment is just a word. It is a word for the existential unifying experience. What about copyrights in the world of spirituality and enlightenment? So this is the aspect that I want to cover. So I roar. I am saying this at the top of my voice. Enlightenment is everybody's birthright and not anybody's copyright. Please remember that the difference between a Buddha and a Buddhu is that of enlightenment. This is a big delta. So it is that difference, from Buddha to Buddha. So that evolution, that delta, that difference from this state minus that state, that I'm calling as a delta. Now, this is a big delta. We have come here on this earth for this delta analysis. We need to conduct the delta analysis every day. What was I yesterday? What am I today? What can I be tomorrow? These are key questions that should make you ponder every day. The delta is the positive difference between these elements. So what I'm calling the delta has to be positive between these two events, between these two elements. If the difference or delta is negative, then you are on the wrong path. That is an indication. And if the difference or delta is positive, then you are on the right path. Your comparison is not with anybody. See, this is the biggest difference when it comes to spirituality. In spirituality, there is no comparison with A or B. That is not spirituality. So your comparison is not with anybody because there is nobody like you.
You are unique. So you have to compare yourself with your past. What was I yesterday? That is my yesterday. So I have to compare my today with my yesterday. Because we are continuously evolving. Uh, compare yourself with your past. Evolution is an improvement on your past. Revolution is an improvement in the circumstances. मीन्स अब जितने भी रिवॉल्यूशंस हो गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, वी टॉक अबाउट दीज रिवॉल्यूशंस. So what are these revolutions? These revolutions have taken place to change circumstances. So evolution is an improvement on your past, on my past, your past. Revolution is an improvement on in the circumstances. Rebellion is an improvement in yourself. This I am calling a spirituality. A rebellion is you are trying to find this difference, past and today, and what can I do to improve that? That is rebellion. So rebellion is not that you are rebelling against your parents, or not that you are rebelling against society. You are not rebelling against your teacher. You are not rebelling against your brother or whatever. Rebelling is a positive thing. You are rebelling against yourself. Whatever your past or whatever your present, it is not acceptable to you. You want to improve upon it. That is your rebellion. That you want to transform, that you want to change. You want to change yourself. It is an inner transformation. It is an inner transmutation. So that I'm calling a rebellion. So it is a positive journey and an inner journey, not an outer journey. A revolution is an outer journey. Evolution, it is taken from the existence side. What existence desires, what is existence vision, we don't know. We don't even have any clue. Where is it all going? We don't know. So that we are calling as an evolution. Something that is taking place from the existence side. Revolution, it is a collective thing that is taking place from few people, a society, some collective people. They want to change circumstances. Whatever the circumstances prevailing, it is not acceptable to them. They want to change. That is a revolution. A rebellion is, I want to change myself. It is whatever that I am, it is not acceptable to me. Whatever my present state, it is not acceptable to me. I could see my past from my present, and the past was not good, it was ugly. The present also not satisfactory. I want to change myself. That I'm calling as a rebellion. So enlightenment is nothing but your existential experience of who you are. In the world of spirituality, there is nothing like content and copyright. Because I was saying enlightenment is everybody's birthright, not anybody's copyright. So content has no meaning here. Words have no meaning here. For example, you have got Bhagavad Gita. Krishna has gone. But Bhagavad Gita is talking about a doctrine, just like what we talked about, the doctrine of fair deal and fair use and fair dealing. In a similar way, Krishna is talking about the doctrine of Karma Yoga, Nishkam Karma Yoga. Unless that becomes part of your being, then that Bhagavad Gita is of no use. Krishna is also no use. No use. That man lived to his words. He followed them. He experimented for the world to see it. He is gone. Same, that is the story of the spiritual words. So all the Upanishads, they are dust, dust is settled on them. They are there for thousands of years. So unless we take shelter, unless we read them, understand them, and experience what they are talking about, unless we experience our own soul, our own self, those scriptures are of no use. So the words are of no use. That's why I'm saying all words in the world of spirituality, they are just shit. Because the word apple is not just apple, not true apple, not the fruit apple. So all contents is just a shit. In the world of spirituality, there is only consciousness. You are a pure consciousness. You are a Shuddha Chetana. You are just nobody. You are just pure nothing. Nobody can know you except yourself. See, we have this dilemma. Can I know somebody? You can never know.
Why my wife can't know me, understand me? Why my parents can't know me, understand me? Why my mother can't understand me? Why my father can't understand me? Why my boss can't understand me? See, nobody is going to understand you. That is not possible. Only you can understand yourself. That master key is not available to anybody. You are a Shuddha Chetana. You are just nobody. You are just pure nothing. Nobody can know you except yourself. God has bestowed this master key solely upon you. Beware. So God has given this key to all individuals to know thyself, to know yourself. So what the Upanishad is saying, Tatvamasi Shvetaketu. You are that Shvetaketu. So we are all that, whatever that is, that truth. Uh, that we have to become. That is the journey. So in spirituality, there is nothing like goal. You are the goal. So when it is saying, the Upanishad is saying Tatvamasi, Shvetaketu, you are that Shvetaketu. You are that means that self you have to realize. Let me give you one, two examples. For instance, there is a flower. Flower has got a form. So the form you can touch and feel. Touch and feel by your hands. So the cognitive senses can see that form. So, but go a little deeper. There is a fragrance of the flower. Now that fragrance of the flower you cannot touch by your hands. You have to you have to smell it to know it. Take another example. Take the example of fruit. Now fruit also is like a form. So it has a nama, rupa. That fruit has a name. Let's say you call it mango, just like Krishna's name is Krishna, Arjuna's name is Arjun. It is a name, it is a nama. And every person has got a form, just like that flower and a fruit. So the fruit has got a name, the fruit has got a form. So nama and rupa. But beyond that, there is something, just like the fragrance of the flower. So here also there is a fragrance of this fruit, but the fragrance of the fruit is of no use. Even if you smell it, it is of no use. It is not like the flower, because flower you cannot eat. The smelling of that fragrance is enough as far as the flower is concerned. But what about the fruit? Fruit, you can take the fragrance, you can smell it, but it is of no use. You have to cut it, eat it, and know it. So in the case of the flower, in order to know the formless, you have to smell it to know it. So in the case of the fruit, to know and experience the formless, you have to eat it to know it. So that taste is formless. So when it comes to the fruit, fruit has got a form, fruit has got a name, but the taste is formless. Taste is you have to eat it to know it. You have to eat it to experience it. Same is the case with the flower. It has got a name, it has got a form. But the formless, hidden in that flower, the fragrance, you have to smell it to know it. Same is the case with our story. You have to jump in the ocean of your consciousness to experience it. So unless you experience your own consciousness, the pure consciousness, which I'm calling Shuddha Chetan, unconditioned one, without any dust, a mirror without any dust. You can see yourself as it is. When you stand before the mirror, if the mirror is not having dust, dust is a metaphor for those memories, conditioning, past, prejudices. All these are limitations to see yourself. So you're not able to see in the mirror. So you are removing those, you are removing that dust. When the dust is gone, the mirror is transparent. Now you can stand before the mirror and see yourself as you are. The same is the case of every individual spiritual journey. You have to dig deeper into yourself. You have to jump into your own consciousness, bring in your awareness to remove this dust. Remove this dust means when you bring in your witnessing mind, when you look at yourself at these three levels, mind, emotions, thoughts, actions, purification happens. So this process of purification is possible through witnessing. So the process of purification is nothing but this
unwinding thing, the 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 removal of your prejudices, your conditionings, your past. So that whole thing goes off, and the mirror becomes a transparent mirror. So you become transparent, your mind becomes transparent, your heart becomes transparent, without any prejudices, without any conditioning. And in that state, you will know yourself. That is the journey of spirituality. In that, they are saying the saying, the ultimate truth is yourself, Atman, and a little ahead, a step further, because Atman is a subset of Brahman. There cannot be anything beyond Brahman. Brahman is the ultimate truth. It's a non-dual truth. Non-dual truth means all duality, all delusion, all divisions, they will all disappear in that state. That is the final reality, the ultimate reality. That is the ultimate reality that we are talking about when it comes to Advaita and Vedanta. So that is it for today. I want to stop. Uh, so today's, uh, I just took this case of content and copyright. So I took Mohawk's case, ANI's case, to discuss what about the spiritual content and copyright relating to that content. So that is it for today. I want to stop my video. I want to stop today's discussion here. So we'll again discuss on some other topic. Thank you. Thank you so much for listening.